Student, in this video lesson, we will start our new lesson, chapter 4, direct and indirect narration. First of all, we need to understand what is direct speech and indirect speech. This is also called direct speech and indirect speech, direct and indirect narration. English language has two ways to narrate the spoken words of a person. इंग्लिश लैंग्वेज में हम जब किसी बंदे के बात को बयान करते हैं तो दो तरीक़ों से हम उसको बयान करते हैं. These two ways are as follows. या तो हम डायरेक्ट स्पीच पे डायरेक्टली उसका बात करते हैं, जब वो उसका जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं हम दूसरे को बयान कर लेते हैं, या उसमें हम कुछ रद्दो बदल कर लेते हैं. So we use these two ways to convey the message of one person to another person, rather in a direct speech or indirect speech. डायरेक्ट स्पीच में या हम बयान करते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच में बयान करते हैं. अगर हम देख लीजिए तो हमारे पश्तो लैंग्वेज में भी हम इस तरह ही डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं. These two ways are usually used to convey a message, spoken word of one person to another person. और ये दो तरीके जो है, तरीक़ेकार जो है, ये अमूमन हमारे पास किसी बंदे के जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं तो हम उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कहते हैं, तो हम ये दो तरीके इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने कोट की है. यू आर एट योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज में हो. मिस्टर अली हु इज़ योर टीचर, मिस्टर अली आपका टीचर है, सेज टू यू आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स व्हेन यू कम टू होम. वो कहता है कि मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहता हूँ. When you come to home, you will inform your parent in the following two ways. जब आप घर आते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को दो तरीक़ों से ये बात कर सकते हैं. या तो आप बिल्कुल उसका जो ओरिजिनल वर्ड है उसको बयान कर सकते हैं, या उसमें थोड़ा रद्दो बदल करके बयान कर सकते हैं. जब हम ओरिजिनल वर्ड, एक्चुअल वर्ड जो होते हैं किसी बंदे के, बिल्कुल उसी की ज़ुबानी बयान करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और जब हम उसमें चेंज लाते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, विच इज़ नॉट डायरेक्ट. मिस्टर अली सेड आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स. इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या कहते हैं, ये बिल्कुल उसका वर्ड है, आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट. मिस्टर अली सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स. वो चाहता था कि वो मेरे वालिदैन से मिले. हम इस तरह कहते हैं ना, जब we use in our Pashto language, we use direct and indirect speech. Direct and indirect speech are also called direct and indirect narration. इसको direct और indirect narration भी कहा जाता है. Understanding direct and indirect speech differences. Here is the difference between. This video is only for the understanding of the basic terminology, direct and indirect speech, and what is the difference between these two way, direct and indirect speech. First of all, we looked into direct speech. What is direct speech? Direct speech repeats or quotes. या तो उसको हम किसी बात को दोहराते हैं या उसको कोट कर लेते हैं, द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन, जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्चुअल वर्ड हो किसी बंदे का. When we use direct speech in writing, जब हम राइटिंग में डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल करते हैं, we place the word spoken between quotation mark. और जो हमारे पास एक्चुअल वर्ड्स होते हैं किसी बंदे के, तो उसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, कोटेशन मार्क्स में बंद करते हैं. जैसे कि ये हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स है. एंड देयर इज़ नो चेंज इन दीज वर्ड. और उसी वर्ड में हम कोई भी तब्दीली नहीं करते हैं. वी मे बी रिपोर्टिंग समथिंग दैट्स बीइंग सेड नाउ. फॉर एग्जांपल, अ टेलीफोन कन्वर्सेशन और टेलिंग समवन लेटर अबाउट अ प्रीवियस कन्वर्सेशन. हम किसी इवेंट्स या किसी बात को रिपोर्ट करते हैं जो अभी हमारे पास हुआ हो या किसी भी वक्त हुआ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ टेलीफोन कन्वर्सेशन, किसी बंदे का टेलीफोन कन्वर्सेशन हो, हम बिल्कुल उसी से उस तरह ही बात कर लेते हैं दूसरे बंदे को जिस तरह वो उसने कहा था.
आर टेलिंग समवन लेटर अबाउट अ प्रीवियस कन्वर्सेशन, और किसी बंदे को प्रीवियस कन्वर्सेशन, आपने पहले किसी से कन्वर्सेशन की और आप उसको फिर वही बात दोहराना चाहते हैं उस बंदे का, तो यू कैन यूज़ डायरेक्ट स्पीच एज वेल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शी सेज व्हाट टाइम विल यू बी होम. दिस इज़ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ दैट पर्सन. शी सेज, किसी लड़की ने कहा है, what time will you be home? So it is the exact word of her. John said there is an elephant outside the window. So this is the actual word of John he quoted. No, we have indirect speech. Indirect speech हम कैसे कहते हैं, and what is the difference between direct and indirect speech? Indirect speech में reported or indirect speech is usually used to talk about the past, so we normally change the tense of the word spoken. Reported or indirect speech हमारे पास past events के बारे में होता है. फॉर एग्जांपल हम किसी पास्ट टाइम के बारे में बात करते हैं तो वी कैन चेंज इट, या किसी ने हमको कोई बात कही हो और हम उसको दूसरे बंदे को कहते हैं तो वो तो पास्ट में हो गया ना. सो वी जस्ट चेंज द वर्ड्स, वी डू नॉट यूज़ द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर. We use reporting verb like say, tell, ask, and we may use the word that to introduce the reported words. Inverted comma are not used. We will look into these rules one by one when we starting the rules of direct and indirect speeches. But here we use reporting verb like say. हम reporting verb, ये हमारे पास reporting verb होता है और जब इसके बाद जो सेंटेंस आ जाता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास सेड, टेल, आस्क एंड वी मे यूज़ द वर्ड दैट. ये जो हमारे पास यहाँ पर है ये डायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट में शी सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है. और फिर उसके बाद हम दैट लगा लेते हैं विच कंजंक्शन विच इज़ यूज्ड एज अ कंजंक्शन, जो हमारे पास दो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक दूसरे के साथ मिलाता है टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड वर्ड. और ये हमारे पास रिपोर्टेड वर्ड आ जाते हैं. Inverted comma are not used, and it is obvious that we do not use inverted comma in indirect speech because inverted comma is used for the actual word of a speaker. So here is an example and the difference between these two. She said, I saw him. This is direct speech. She said, I saw him. When we change it into indirect speech, so we just change the word she said and we remove the comma and we put that, and after that we use she instead of I. It means we change the words had seen him, and also we change the tense. We will look into all these changes. There are so many rules used while changing the direct speech into indirect speech, और हम इसको वन बाय वन करेंगे. So this lecture is just the introduction section of direct and indirect narration and how we change direct and indirect speech. No, the lecture is end up with this point. I am giving you a home assignment. Write the whole slides in your neat notebook. Understand the lesson through video lesson. Memorize the definition of direct and indirect narration and also understand the difference between these two ways of speech. You have to understand the difference between these two ways of conveying the message, how we can convey the message of one person to another, either in a direct or in indirect speech. So see you in next class with the rules of direct and indirect narration. Allah Hafiz.